सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम लोगों ने पहले कुछ कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा था। अब हम रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस के बारे में देखेंगे, जो ये चैप्टर 1 का क्लास 6 का फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि ये कह रहा है कि समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। तो क्या है देखते हैं। जैसे कि 1 तो 1 हो गया, फिर 1 + 3 4 है, 1 + 3 + 5 9 है, 1 + 3 + 5 + 7 is 16, and 1 + 3 + 5 + 7 + 9 is 25, and then 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 is 36। तो हमें यहाँ कुछ दिख रहा है, ये हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर, ये सेकंड ऑड नंबर, ये थर्ड ऑड नंबर, ये फोर्थ ऑड नंबर, ये फिफ्थ ऑड नंबर। हमें ये पता है कि ऑड नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा चलता जाता है। तो ये क्या किया कि ये पहले वाले में पहले को ऐड किया, फिर दूसरे वाले में दो को, फिर तीसरे वाले में फर्स्ट थ्री को, फिर चौथे वाले में फर्स्ट फोर को, और पांचवें वाले में फर्स्ट फाइव को, और छठे वाले में फर्स्ट सिक्स नंबर्स को ऐड किया है, जो ऑड नंबर्स है, राइट। तो फर्स्ट में हमने ये देखा कि 1 है, फिर सेकंड में जितना भी ऐड किया वो 4 आया, ये थर्ड में जितना भी ऐड किया वो 9 आया, फिर 16, फिर 5 नंबर्स को ऐड किया 25 आया, और ये फिर 6 नंबर को ऐड करने पे 36 आया। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं। अम, एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो है 4, ये क्या है 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या है 9, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, फिर ये 25 क्या है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, और फिर ये 36 ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन, उसमें जितने ऑड नंबर्स हैं, इनिशियल ऑड नंबर्स, ना कि मतलब कि रैंडमली कोई भी ऑड नंबर्स उठा लिए, सीक्वेंशियल वाइज ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जितने ऑड नंबर्स हैं उसमें उसका सम जो भी होगा उसका हमेशा स्क्वायर बनेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स हैं, तो वो भी सीक्वेंशियल वाइज, जो 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। ये सीक्वेंशियल वाइज 4 ऑड नंबर्स हैं starting with 1, then it will be 4 square. It is sequential wise 5 odd numbers starting with 1 will be 5 square, and this is sequential wise 6 odd numbers, that is 36, and which is 6 square. Isn't it interesting? Huh? We see that the numbers are adding up and forming a square of the same number of numbers. So we can say that this is so simple and not that much kind of tough to understand ki what are we learning here. So we can simply say that this can happen forever. We can say that if we add 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13, then we will get, you know how much, we will get 7 square, that is 49. Try it at your home when you are practicing. It will definitely come 49. And so we can see that it is becoming interesting, and we are mm, anyone can be so mesmerized in using these things now. uh, so we can say that these kind of patterns will happen forever. But why? The question rises, but why? So we see that the reason why the pattern happens is just as the important and exciting as the pattern itself. So let's see why does it this pattern will continue forever or follow up forever. So let's see it through the picture. Visualizing with a picture can help explain the phenomenon. Recall that square number are made by counting the number of dots in a square grid. Yeah. So this is talking about this square number. Let me show you. Um, it was here. Just hold on. Yeah. So this is talking about this one. This one. So mm,
how can we partition the dots in the square grid into odd number of dots 1 3 5 7? Think about it for a moment before reading further. So let's see how can we partition those numbers. See, if we write, just let's make a square of 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Now we will count from up to down, so that if it is 7 or not, to check if it is 7 or not. 1 2 3 4 5 6 7. Yeah, it's 7. Now we will see how are they making a square grid from the odd numbers. So let's take another color to make you understand. So this one is 1, that is 1 square, right? Now if we take this one, this is 3. So this one plus this 3 will be how much? 4, right? So this is 1 plus 3, that is 4. And we can see that this thing, whole thing, is 4 number and square of 2, right? Now if we take this one, these are 5. So 1 plus 3 plus 5 will be 9. That will be 3 square, right? Now 1 plus 3 plus 5 plus 7, right? So 1 plus 3 plus 5 plus 7 will be how much? Any guesses? 16. That will be a square of 4. So we can say from here that we are making a square of 4 here. We are making a square of 4, and by adding the um, odd numbers, right? First odd number, second odd number, third odd number, and fourth odd number. So that is 4 odd numbers in sequence wise. If we add, then we can make a square. So we see that we are making a square here. Now coming to the second page, let's discuss what is it there. So yeah, we can see here, this one is the one, then we added 3, then we added 5, then we added 7, then we added 9, then we added 11, and we are getting the whole sum as 36. Yeah, 1 3 5 7 9 11 is 36. Because such a picture can be made for square of any size, this explains why adding up odd number gives a square number. So we can say that adding up odd number can make a square. uh, if we add odd numbers in a sequence, or if we add odd numbers in a sequence starting with 1, that is starting with 1 3 5. If we if we add odd numbers starting with 1, then we will always get the square of any number, right? Remember that thing. And that's the basic thing to learn from these things. So now coming to this point, by drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first and odd numbers? So we got it from here that that if we add, see, so we can say from here, if we add first two numbers, then we are getting 2 square. If we add first 3 odd numbers, then we are getting 3 square. If we are getting first 4 odd numbers, if we are adding first 4 odd numbers, then we will get 4 square. If we are adding first 5, if we are adding first 5 odd numbers, then we are getting 5 square. And if we are adding first 6 odd numbers, then we will get 6 square. So we can say that if we add um, hold on, so if we add sum of first 10 odd number, then what do you think, what will we get? We will get square of 10, that will be 100. Got it? So we can draw a similar picture like this one. um,
1 2 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I'm actually adding. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and from this side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we can say from here that if we add these numbers, then always this will always be 10 into 10, that will be 100, right? And like 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 and plus 19, right? So if we add these things, then we will always get 100. So now if we see the next question. Now, by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 numbers? So, for the first 100 odd numbers, what will we say? For the first 100 odd number, if we have to find the sum, then we will just put the square on 100 and we will find the answer. That will be 100 into 100, and that will be equal to 100, that is 10,000. Okay, so we got this. Now let's see the different example from for the relation between the sequences. So we were just adding up. Now we will add up and down. So for the first term, we can say here that if we add the if we can write 1 as a 1, or we can write a 1 square. Then here we can write 1 plus 2, and we are adding up to here is adding up. Now if we add 1 2, then we can say we are adding down to. 1 plus 2 is adding up, and after that adding 1 is down. Now 1 plus 2 plus 3 is adding up. Now the again the number previous of the 3, that is 1 and 2, if we add both of them here too, then we can say adding up and down. Similarly 1 plus 2 plus 3 plus 4, and then this 3 2 and 1, that is 3 2 1, if we adding them this way, then we can say we are adding up and down. So if we add up and down, then we will get, see how, see what will we get. 1 plus 2 plus 1 is 4, that is 2 of square. 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 is 9, that is 3 square. Similarly 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is 16, that is 4 square. And similarly this way 5 square, and this is 6 square. So we can say that if we add any number from if we add odd numbers up and down, if we add odd numbers up and down, then the number which we are getting
will be the square of the highest odd number in the sequence, right? So इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर अप एंड डाउन में ऐड कर रहे हैं, राइट, ये अप में है इतना, फिर यहाँ से डाउन हो गया, इतना यहाँ से यहाँ तक अप है, फिर यहाँ से फिर ये डाउन में है, तो ऑड नंबर को अगर हम अप में ऐड करें, फिर उसके बाद वहाँ से उसको डाउन में ऐड करें, तो ऑड नंबर, उस ऑड नंबर का सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस में जो हाईएस्ट ऑड नंबर होगा, ये जो हाईएस्ट ऑड नंबर है, राइट, इस हाईएस्ट ऑड नंबर का स्क्वायर ये पूरे का सम होगा। यानी कि ये हाईएस्ट ऑड नंबर यहाँ 5 था, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसी तरह देखें, अगर हम यहाँ पे 1 to 6 तक अप में ऐड किए, फिर 6 के बाद से डाउन में ऐड कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड किए, और यहाँ जो इसका हाईएस्ट वैल्यू था, हाईएस्ट वैल्यू को हम स्क्वायर निकाले और उसका स्क्वायर 36 निकला, तो यहाँ पे अप एंड डाउन करने पे उसका स्क्वायर निकल रहा है, राइट। अब देखते हैं इसको, ये कह रहा है कि दिस सीम्स टू बी गिवन येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन, ठीक, अप एंड देन डाउन, ठीक है ना। वही ये कह रहा है कि हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं अप एंड डाउन, जो ऑड नंबर एक्चुअली, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिल रहा है उसका। आगे देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कोई सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन निकालने के लिए कह रहा है। ये जो बनाई गई है यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 2 1, ये वाला देखते हैं हम यहाँ क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि 1 है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 1 है, उसके बाद फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 है, उसके बाद फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि ये 1 हो गया, राइट, ये 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, राइट। मतलब कि ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। फिर तो इससे हम ये समझ में आ रहा है कि ये 1, ये 2 और ये 1, ये पूरा मिलके एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। अब अगले के लिए देखते हैं। अब जैसे कि ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर ये हमारा 3 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे आ, ये हमारा 3 हो गया, सॉरी, ये हमारा 2 हो गया, और फिर ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया 3 into 3 का, राइट, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। पहले हम लोगों ने 1 लिया, फिर 2 लिया, देखो, ये रहा 1, फिर ये रहा 2, फिर ये रहा 3, फिर 2 1, ये 3 के बाद ये रहा 2 और ये रहा फिर 1, राइट। तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए देखते हैं। इसके लिए पहले में हम लोगों ने 1 ऐड करना है, फिर 1 के बाद फिर 2 ऐड करना है, फिर 2 के बाद फिर 3 ऐड करना है, फिर 3 के बाद एक 4 ऐड करना है। यहाँ तक हम लोगों ने 4 तक का देख लिया, ठीक है, ये 4 तक का देख लिया। अब 4 के बाद से हमें पहले कितना ऐड करना है, पहले 3 ऐड करना है, राइट। तो 3 ऐड करने के लिए हम पहले ये 3 ले लेंगे, फिर 3 के बाद फिर हम ये 2 ले लेंगे, फिर 2 के बाद हम ये 1 ले लेंगे। तब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें हम लोगों ने फिर से एक स्क्वायर बना दिया। ये देखो, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काम कैसे करती है। तो इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं अपने नोटबुक में कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है,
हाँ, तो can you find a similar pictorial explanation for why adding counting number up and down, that is 1 1 plus 2 1 1 plus 2 plus 1 plus 1 फिर 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 गिविंग स्क्वायर नंबर। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि ये जो था कि कैसे काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन करने पे वो स्क्वायर नंबर दे रहा है, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये लास्ट एग्जाम्पल जो था हम लोगों ने देखा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 है, ये कैसे दे रहा है। ये 1 हम लोगों ने लगाया, फिर ये 2 लगाया, फिर ये 3 लगाया, ये फिर 4 लगाया, फिर 3, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 1। तो ये पूरा मिल के एक स्क्वायर बना रहा है। तो ये हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड, can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 99 plus 100 plus 99 plus dot 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 plus 3 plus 2 plus 1। तो इसमें हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमें पता है कि जब हम ऑड नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे होते हैं तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है, राइट, उसका टोटल सम जो होता है उसका स्क्वायर बन जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, हम यहाँ पे जो जितने भी ऑड नंबर है इसको यहाँ पे अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हाईएस्ट नंबर 100 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम क्या होगा, सिंपली 100 स्क्वायर यानी कि 10,000, राइट। वी गॉट द आंसर, सिंपल। देखो मैथ्स सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितने लोग सोचते हैं, क्योंकि मैथ्स को बस एक बार देख लिया ना कि कैसे काम करता है तो पूरा का पूरा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ तुम्हें समझ आएगा। थ्योरी, फॉर्मूलाज, ये बच्चों वाला चीज है कि क्या है, ये तो लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड व्हेन व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन, ठीक है ना। तो पहले एक हम देखेंगे सीक्वेंस अप के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे सीक्वेंस अप एंड डाउन के लिए। तो इसको थोड़ा इधर स्लाइड करते हैं ताकि इजीली समझा जाए चीज़ों को। तो इसमें सीक्वेंस अप के लिए, राइट, सीक्वेंस अप मतलब सिंपली 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाएंगे। तो इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे 1 के लिए 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 के लिए 2 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 के लिए 3 होगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 के लिए 4 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जैसे ही हम सीक्वेंस अप में 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये काउंटिंग नंबर्स आ रहा है, राइट, काउंटिंग नंबर्स आ रहा है। अब ये कह रहा है कि सीक्वेंस अप एंड डाउन के लिए करेंगे। हमने ये देख लिया कि अगर सीक्वेंस सारे वंस को सीक्वेंस अप में ऐड करते हैं तो हमारे पास काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस आ रहा है। अब यही सारे वंस को सीक्वेंस अप एंड डाउन में करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो सीक्वेंस अप एंड डाउन, राइट, फॉर वंस, एक फर्स्ट के लिए 1 हो गया। अब 1 प्लस 1 ये अप हो गया, फिर अप के बाद फिर डाउन भी जाना है, फिर 1 प्लस 1 ये इतना अप हो गया, फिर अब डाउन जाना है, राइट। मतलब यहाँ तक पहुँच गया, फिर इधर जो था उसी को इधर बस लिख देना है, राइट। फिर 1 प्लस 1 फिर डाउन जाना है, सॉरी एक और, फिर डाउन जाएंगे 1 प्लस 1 इतना, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर ये। अब सबको सम करेंगे। ये तो 1 था पहले से, ये 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी सीक्वेंस अप एंड डाउन में ले जा रहे हैं वो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस, ये हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस बन रहा है, राइट। ऑड नंबर का सीक्वेंस। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ सीक्वेंस अप करते हैं एडिंग में तो हमें काउंटिंग नंबर मिलता है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, सीक्वेंस अप एंड सीक्वेंस डाउन दोनों करेंगे, सीक्वेंस अप एंड डाउन, तो यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस बन के आएगा हमारे सामने,
ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट होल्ड ऑन। यस, वी आर हियर, which, yeah. So in question number 4, we can see that it's written, which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? Can you give a smaller pictorial explanation? Right. So can you give a smaller pictorial explanation? तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हम लोग काउंटिंग नंबर्स अप में ऐड करते जाएं तो हमें क्या सीक्वेंस मिलता है। तो काउंटिंग नंबर्स करते हैं सिंपल, 1, यहाँ 1 + 2, यहाँ 1 + 3, sorry 1 + 2 + 3, then 1 + 2 + 3 + 4. So here we will get 1, here we will get 3, here we will get 6, here we will get 10, then again we will add one more, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, here we will get 15. You remember the triangle pattern, 1, 3, 6, 10, 15. Let me show you the triangle pattern. See, 1, 3, 6, 10, 15. This one. So 1, 3, 6, 10, and 15. The same pattern we are seeing here. So we can say if we add sequence numbers, add counting numbers up in a sequence, then we will get the sequence of triangles, right? We can say we are forming up a sequence of triangles. These triangles, let me show you that again. These triangles, triangular number sequences. Can you give a smaller pictorial representation? So let me show you how can we do this. For the first, this is for second 1 + 2, right? Then the third, let's make it to 15, then I can explain you well. So we can say that कि यहाँ पे टॉप में ये जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट हमारा ये हो गया, राइट। और उसके बाद फिर फर्स्ट के बाद ये 2, 1 + 2 दैट इज 3, उसके बाद थर्ड 1 + 2 + 3, उसके बाद फिर फोर्थ 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद फिर 5 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हमारा ट्रायंगल सीक्वेंस बन रहा है। ये हम एक एग्जांपल दे सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये हमारा बहुत आसान पड़ेगा समझाने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। What happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers? That is, take 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15. देखते हैं क्या है। So we can say कि just hold on. हाँ, so it's saying okay, what happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers, that is taken. So initially we have to add 1 + 3, then 3 + 6, then 6 + 10, then 10 + 15, likewise.
We can also write 15 plus any guesses. 21, right? So this is 4, this is 9, this is 16, this is 25, and this is 36. We can say that we are getting the square of numbers, counting numbers. This is 2, this was the 2 square, this is 3 square, this is 4 square, this is 5 square, and this is 6 square. So we can say that we are getting a sequence of square numbers for the counting number, right? So we are getting the square of counting numbers, right? Leaving the one behind, okay? And if we look at these things, then I guess 3 and 6, okay, 6 and 10, 3, 3, right? And from this side, hold on, this is 3, this is 3, and this is 4, right? um, 4, 5. Ah, okay, let me show you. So 1 plus 3 is 4 is 2 square. How does it came? See, here is 1 and we added 3. So this came as 4 and that is 2 square. Now 3 plus 6. So we get it 3 from here, and where will we get the 6? The 6 from 6 we will get from here. This 3, right? And this 3 is making 6. So 6 plus 3 is making 4 square. Let me show you. Sorry, 6 plus 3 is making 3 square. So this is 3 square, right? Now, mm, let's do it for 6 plus 3 plus 6. So we are not 3 plus 6, 6 plus 10. So this one, this is 6. Okay. Now for the 10th one, this is 3 and this is 7, right? So we are making how much? 4 square, that is 16. Or we can make it in another way. Let me show you. uh, if we have to add 1 and 3, so this is 1 and this is 3, right? So if we add here like this one, we can make it like this one. This is 3 and this is 1, so we have added here, so we can say that this is making 2 square. Now this is 3 and this is 6. Now we will add and see what we will get. This is 3 and this one was 6. Now let's add it in here. Now add this one in here. So like this one, I guess. Yeah, okay. So let's flip it, right? Let's make it like this. ऐसे ऐसे बनाओ इसको, और ऐसे बना के यहाँ पे इसको ऐड करो, राइट? इसमें और जब इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये हमें एक पूरा का पूरा 3 का स्क्वायर दिख गया। सो हम ये कह सकते हैं कि 3 प्लस 6 जो है वो 9 बन रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये था हमारे लिए बहुत ही ईजी था, उतना भी मुश्किल नहीं था। ये पिक्चर से हम समझ सकते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि what happens when you start to add up powers of 2 starting with 1, that is take 1, then 1 plus 2, then 1 plus 2 plus 4, then 1 plus 2 plus 4 plus 8. Now add 1 to each of these numbers. What numbers do you get and why does this happen? So let me see, what can I do? Hold on.
Okay, so uh, we have to find what? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम 1 लिखें, फिर 1+2 लिखें, उसके बाद फिर 1+2+4 लिखें, उसके बाद फिर 1+2+4+8 लिखें, तो इनका जो सम बन रहा है ये सम बना के क्या मतलब हमें मिल रहा है? ये 1 है, ये 3 है, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या है? 1 3 7 5 का सीक्वेंस। सो 1 3 7 5 5 नॉट 5, इट्स 15। 1 3 7 15 का एक सीक्वेंस बना के हमें ये दे रहा है, राइट। तो जब ये हमें सीक्वेंस बना के दिया, तो अब क्या बोला कि अब सब में एक एक ऐड कर दो, राइट। चलो सब में एक एक ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें भी एक ऐड कर दिया। अब ये देखो, ये कितना दे दिया? ये 2 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 8 दे दिया, और ये 16 दे दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ ये? ये हमें एक पैटर्न बना के दे दिया। क्या बना के दिया? एक पैटर्न। किसका पैटर्न? ये देखो, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, यहाँ पे इक्वल होगा ये 2 का पावर 4। हम ये देख पा रहे हैं कि ये पैटर्न क्या दे रहा है? ये पैटर्न दे रहा है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस दे रहा है, राइट। तो ये पावर ऑफ 2 का हमें सीक्वेंस दे दिया। तो जब ये हमें पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस दे दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न में जब हमने 1 ऐड किया हर एक नंबर्स पे, तो ये हमें पैटर्न दे रहा है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस। और ये क्यों हो रहा है? तो देखो, शुरुआत में कोई भी नंबर जिसमें पावर का होता है ना, जैसे 2 है, तो 2 का जो पावर है, जीरो से अगर देखें तो 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, फिर 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, राइट। अब इनमें कोई भी नंबर, जैसे कि 2 है, तो 2 में अगर -1 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, फिर 4 में -1 करेंगे ये 3 हो जाएगा, 8 में -1 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इन नंबर्स में 1 जब कर रहे थे तो ये हमें पावर ऑफ 2 बना के दे रहा था, और जब ये पावर ऑफ 2 बना के दिया, तो हमें ये इस फॉर्म में आ गया सारा का सारा, राइट। तो सिंपली यहाँ पे वही हुआ कि जितने भी नंबर्स थे उनमें अगर हम 1 ऐड कर देते तो सारा का सारा पावर ऑफ 2 बना के एक सीक्वेंस, मतलब 2 का पावर में नंबर्स आ रहे थे, और उसका एक सीक्वेंस बनते हुए हमारे पास आ रहा था। ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, राइट। और एक सीक्वेंस हमें बना के दिया ऐसे ही करके। तो ये ऐसे ही काम किया, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वो तो मैंने बता ही दिया कि जो 2 का पावर 2 था, या सॉरी, जो 2 का पावर 1 था, राइट, जो 2 का पावर 1 था, यानी कि 2, उसमें एक कम था, राइट। एक कम यानी कि ये जो 1 था, 1, फिर 2 का पावर 2 में, यानी कि जो 4, इसमें एक ये कम था। तो इन सारे नंबरों में जब हम लोगों ने 1 1 जोड़ा, तो 1 1 जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था? 2 के मल्टीपल्स आ रहे थे, और वो 2 के मल्टीपल्स में क्या नहीं, 2 के पावर्स में आ रहे थे, तो इसलिए वो हमारा पावर्स में आया, राइट। तो अब हम इसमें नेक्स्ट में देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट में। ओके, what happens when you multiply the triangular number by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? So we remember that triangular numbers are 1 3 5 7 9. Am I right? No, the triangular numbers are 1 3 uh, 1 3 6 10 15 21, right, dot 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 dot. So they are triangular numbers. Now what it is saying that what happens when you multiply triangular number by 6 and add 1? So we will um, multiply
we will multiply now. Let's write them in sequence. 1 into 6 plus 1, then 3 into 6 plus 1, then 6 into 6 plus 1, then 10 into 6 plus 1, then 15 into 6 plus 1, then 21 into 6 plus 1. So what are we getting from this? So we will get 7 here, then we will get 19 here, then we will get 37 here, then we will get 61 here, then we will get 91 here, then we will get 167 here, right? Sorry, not 167. It will be 127. Okay, so we can see from the first three patterns that these are hexagonal patterns. Do you remember? These are hexagonal patterns. So these hexagonal patterns, we show that this one, then this one, और फिर यहाँ पे ऐसे. I hope you remember this thing. So this one, this is 7. Sorry, this is 7, 19, and then the next one will be 31. This is 1, this is 7, this is 19, right? So this is making a hexagonal pattern. So when we multiply 6 and then add 1 in triangular numbers, then we will get hexagonal patterns in triangular pattern. If we take the triangular pattern sequence, if we take the triangular sequence, uh, if we take the triangular sequence and multiply it by 6 and then add 1, then we will get the hexagonal pattern or sequence, right? So now let's see the next question. um, what happens when you start to add up hexagonal number, that is 1, then 1 plus 7, then 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37. Which sequence do you get? Let's see what do we get here. Hmm. So 1, then 1 plus 7, then 1 plus 7 plus 19, then 1 plus 7 plus 19 plus 37. Let's see what do we get from the addition. So this is 7 plus 1, 8, 8 and 19 is 27, 27 plus 37 is 64, then 1 plus 7 plus 19 is um, 27, and 7 plus 1 is 8 and 1 is 1. So we can say from here that 1 is the cube of 1, 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3, and 64 is the cube of 4, right? So we can say from here that we are getting the sequence of cube numbers, right? And the numbers are the counting numbers. And which sequence do you get? We got that these are the sequence of cube numbers. Cube numbers. Now, can you explain it using a picture of a cube? So here, if you see that this is mm, mm, this is 4, this is 4, and this is 4. So this is the 4 into 4 into 4 cube, right? Now, if you see from here, this is 4, this is 4, and this is 4. So this is also 4 into 4 into 4. So if we see that if we add, I mean if we multiply here, this is 4 into 4 into 4, this will be 64, right? This will be 64 smaller cubes in one whole cube, and this will also be 64, because we can say that this one is 4 into 4,
this one is 4 into 4, and this one also is 4 into 4. So 4 into 4, right? And 4 into 4 into 4 sides will be 64, and this actually both of them are same, both of them are making the same point. And here you can say that यहाँ पे ये जो बना रही है पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इसी के बराबर है, राइट? कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, ये भी पॉइंट्स इसी के बराबर है, और ये भी जो पॉइंट्स है इसी पॉइंट्स के बराबर है। और जब हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं तो तीनों में मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे 64 नंबर्स ही आ रही हैं, राइट? हम इसको थोड़ा दोबारा समझते हैं। यहाँ पे ये जो टोटल नंबर है यहाँ पे, ये हेक्सागन्स में टोटल नंबर ये 37 है, ये अंदर वाले भी मिला के, राइट? और ये भी मिला के, और ये मिला के टोटल 37 हो रहे हैं। तो हमें ये, और इसमें एक और चीज़ ये दिखा यहाँ पे कि इसमें ये एक पैटर्न बन रहा था। ये पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न है यहाँ पे, और ये पैटर्न बेसिकली ये 4 इंटू 4 का दिखा रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 का, जो कि इसी के सिमिलर में है, राइट? जो कि यही सिमिलर में है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। तो सिमिलर पैटर्न में होने की वजह से ये हमें दिख रहा है कि जो इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दोनों दिखने में सेम जैसे लग रहे हैं, पर लेकिन अगर काउंटिंग में देखें तो दोनों में काउंटिंग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 का क्यूब देखें तो ये 64 हो रहा है, पर ये जो नंबर है 37 है। अब देखो, ये जो 37 था, हम लोगों ने एडिशन 37 तक किया, राइट? पहले यहाँ पे जो बीच वाला था 1, फिर ये 7, 7 ये वाला होता है 1 प्लस 6, राइट? फिर 19, 19 जो है ये वाला 19, 19 ये वाला आएगा अपना, राइट? और उसके बाद फिर 37, 37 जो है वो लास्ट वाला जो बॉर्डर लाइन में है वो आएगा। तो ये जब हमने चारों ऐड किया तो वहाँ पे 64 आ रहे हैं ऐड करने के बाद, तब फिर वो जाके 4 का क्यूब बन रहा है, राइट? अब ये 4 का क्यूब इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसे ऐड किया 37 तक, जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में थे, और जब 37 तक हेक्सागोनल पैटर्न को ऐड करते हैं तो हमें 4 का क्यूब नंबर सीक्वेंस में आंसर देते हैं, राइट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज? चलो तो टेबल 1 में जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसमें कह रहा है कि खुद का पैटर्न खोजने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए एक पिक्चर के साथ कि वो ये दिखता ऐसा क्यों है, राइट? हाँ, तो जैसे कि कोई एक पैटर्न यहाँ से निकालते हैं, कोई पैटर्न, हम्म हम्म, एक पैटर्न हम क्या सोच सकते हैं उसमें? पैटर्न तो सारे वहाँ दिए हुए थे, जैसे ये टेबल 1 था, um, yeah, 1392 वेरहांका ट्राई करें, वेरहांका, या फिर ट्रायंगुलर्स इवन काउंटिंग नंबर। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हम्म यहाँ से हमें क्या पैटर्न दिख रहा है? सिंपल
अच्छा अच्छा अच्छा, फाइंड योर ओन पैटर्न कह रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसा देखते हैं, वी नो, एक समझ लो ऐसे कि let's write a table of 4, right? um, hmm, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5, right? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं कि ये जो 4 है, यहाँ पे इनका पैटर्न आता है 1 2 3 4। ये 8 है, इनका पैटर्न आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो 4 है, ये 12 है, इनका पैटर्न आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इनका पैटर्न आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड अगेन 1 2 3 4। इनका पैटर्न आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and again 1 2 3 4. So we can say that we are also making a pattern from 4 8 12 16 20. Similarly, we can make another patterns likewise. mm, Take a table, not the table, take like 10 20 30, right? So these are also sequence of 10, of multiple of 10. तो इसका पैटर्न अगर हम लिखें यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 3 3, या। So similarly for 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and similarly for this one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we can make variety of patterns from using our brain, our excellent brain. मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके पास इनफ ब्रेन है, इनफ इंटेलिजेंस है कि वो खुद के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस उन्हें एक राइट फ्लो की ज़रूरत है, राइट पाथ की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को बिलीव दे सकता हूँ, बिलीव करा सकता हूँ कि आप यहाँ से सीखो, डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा हमेशा के लिए, और आप लोगों से आगे रहोगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मैं बिलीव दे सकता हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो आपको लगे आप करो, ना करना है ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखो और कुछ ना कुछ यहाँ से आप सीख के जाओ। कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको बस देखना है, हाँ लग रहा है मन नहीं लग रहा है ऐसा करके, नहीं। अगर आप आए हो देखने के लिए तो देखो, एटलीस्ट कुछ सीखो, ठीक है ना। मैं बस लोगों से यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ सीख के जाओ। चलो ठीक है, बाय बाय।